के साथ बता रहे थे कि हमने पीरियोडिक इंस्पेक्शन मेंटेनेंस उनके सब रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं और सीख रहे हैं कि रिपेयर कैसे होती है। तो अभी हमारा रिपेयर काम शुरू हो गया है मनेरी प्रोजेक्ट में। इसी तरह से जो हमारी जल विद्युत निगम संस्था है, क्योंकि ये अग्रणी संस्था एक हो गई और हमारे पास 15 डैम हैं हमारे प्रदेश में, उनके लिए हमारा विजन ये भी है कि हम अपने प्रदेश में सभी डैम्स को सुरक्षित करेंगे ही, लेकिन हमारी संस्था अगर एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेती है, हमारा जल विद्युत निगम के इंजीनियर्स अगर इसमें अपनी दक्षता हासिल कर लेते हैं और कर रहे हैं, सीखने के लिए जापान जा रहे हैं, कभी हॉलैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं और वहाँ के लोग भी आ रहे हैं, तो फिर हम इस संस्था को एक कंसल्टिंग एजेंसी पूरे देश के लिए, मैं सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करूँगा, एक सबमिशन करूँगा, सर वी आर ट्राइंग टू डेवलप दिस एज अ प्रीमियर लीड एजेंसी which will then step in the place of foreign agencies and provide support consultancy leadership work in dam safety to the entire country। क्योंकि हमारे पास अपने बहुत डैम्स हैं और हमारी जल विद्युत परियोजनाएं भी लगी उन डैम्स पे, तो हमारे पास एक विशेषज्ञ और हमारे पास IIT रुड़की का नॉलेज हाउस हमारे पास उपलब्ध है। तो हम चाहेंगे कि हमारा उत्तराखंड जो है वो पूरे प्रदेश के लिए हाइड्रो पावर में और विशेष रूप से डैम सेफ्टी में एक लीड स्टेट बन के, एक लीडिंग एजेंसी बन के इस काम को आगे बढ़ाए। और जो काम भारत सरकार ने शुरू किया है पूरे देश में डैम्स की सेफ्टी करने का, उसमें हम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। और इसलिए भी कि हमारे अपने प्रदेश में भी बहुत सारे डैम्स हैं और बहुत बड़ा सुरक्षा का विषय है। टेहरी डैम इतना बड़ा डैम है, अभी हम लखवाड़ डैम बना रहे हैं, बहुत बड़ा डैम, उसके बाद किसाऊ में भी बहुत बैराज बनेगा और दूसरी चीज़ें बनेंगी। तो हम ये चाहते हैं कि इस ड्रिप प्रोग्राम के माध्यम से हम सीख लें, हम एक्सपर्टीज़ हासिल कर लें, अपने बांध सुरक्षित कर लें और फिर देश के लिए उत्तराखंड को हम आगे लीडर की तरफ प्रोजेक्ट करें। एक बात और बतानी चाह रहा था आपसे कि दिस इज नॉट ए वन ऑफ एफर्ट कि एक बारी हम आगे उठ के मुंह उठा के रुड़की आ गए। दिस इज द थर्ड कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस वाज डन इन तमिलनाडु 15 में, सेकेंड कॉन्फ्रेंस वाज डन इन बैंगलोर 16 में, एंड दिस इज द थर्ड वन। एंड IIT हैज बीन अ पार्टनर, IIT रुड़की हैज बीन अ पार्टनर। So the whole idea is जो सुमा बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि we should not get a one-off, a consultant आया और अपना रिपोर्ट बना के दे गया। Whatever he or she has talked about or done, there is an agency here which absorbs that knowledge and can do reverse engineering on it। क्या किया उन्होंने, उसको कैसे better किया जा सकता? How can we be one better than them on that? So that's why a great emphasis. पहली बारी you see all the institutions, IIT के, NIH के लोग, CWC का ऐसा बहुत नाम है। CWC के जो हमारे लोग हैं, CWC and IITs have been working in very close this thing। पूछ लीजिए, कुछ पूछना ये पूछना चाह रहा था, जैसे ये ड्रिप प्रोजेक्ट प्रमोद, आप एक मिनट आना चाहिए। Pramod is our national program director for this project। You want to say something, Pramod? You want to add something? You can add if you want to add something। मैक्सिमम तो कवर हो गए। हाँ बोलिए। एंड जो चौथा कॉन्फ्रेंस हमारा होगा ऑलरेडी डिसाइडेड केरला में होगा फरवरी 2018 में। एनुअल इवेंट है और इसका मकसद ये है कि जो हमारे 7 स्टेट को छोड़ के बाकी जो स्टेट बचे हुए हैं 16 और हैं जिसमें बहुत सारे डैम्स हैं, सभी को एक जगह बुला के कि क्या एक्टिविटी चल रहा है, क्या ट्रेनिंग है, क्या टेक्नोलॉजी है, सो दे शुड आल्सो फील इन्वॉल्व इन ऑल द एक्टिविटीज। ये हमारा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव है इसका, कैपेसिटी बिल्डिंग का ही पार्ट है कॉन्फ्रेंस। तो ये सब उसमें क्या पूछ रहे थे? जैसा आपने बताया कि ट्रिप में हम जापान के जो वैज्ञानिक हैं उनका सहयोग हम दे रहे हैं, तो ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपको क्या लगता है कि हमारा जो देश है, यहाँ की जो विशेषज्ञता है, वो अभी जापान जैसे देशों से कितनी पीछे है? और चूंकि अभी हम खुद उसको नहीं कर पा रहे हैं, कितना टाइम हमें लगेगा कि हम बिल्कुल उनके पैरेलल होंगे? क्या डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस। ओके, इसका जवाब मैं दूँ? जी हाँ। सो आई थिंक आपने बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। और इंडियन एकेडमिया जो है वो अभी पिछले 10-15 साल में अब बाहर निकलना शुरू किया है उसने, इन द सेंस कि रिसर्च तो हम पहले भी करते थे, लेकिन हमारा इंटरेक्शन गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ और हमारा इंटरेक्शन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्राउंड बहुत उतना नहीं था। ये रियलाइजेशन हुआ है दोनों तरफ से,
और पिछले 10-15 साल में हमारी जो विजिबिलिटी है, इम्पैक्ट है, कोलैबोरेशन है, इंटरेक्शन है, ये काफ़ी बढ़ा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो नेक्स्ट डिकेड आने वाला है अगले 10 साल में, आप देखेंगे कि जो एक्सपर्टीज़ और टैलेंट छिपा हुआ है हमारे पास वो उभर के सामने आएगा और तब हम सब बराबरी पे बात करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हमको जापान और यूएस के एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए, हमारा मतलब है कि 2 वे एक्सचेंज होगा, हम भी उनको बताएंगे, वो भी हमको बताएंगे। अभी गवर्नमेंट में शायद कहीं पे ये फीलिंग है कि शायद वी शुड ऑलवेज रिलाई ऑन फॉरेन एक्सपर्ट्स, राइट, बट हम ये भी करेंगे कि गवर्नमेंट को भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस दें कि नाउ वी हैव एनफ कैपेसिटी, एनफ टैलेंट, एनफ एक्सपीरियंस, राइट, टू बी एबल टू इंस्पायर देयर कॉन्फिडेंस। वी डू रियलाइज दैट वी हैव टू वर्क इन इंस्पायरिंग देयर कॉन्फिडेंस, बट वी आर एड्रेसिंग दैट वेरी एग्रेसिवली। और इसीलिए आज दोपहर में एक सेपरेट मीटिंग हमने सेक्रेटरी साहब के साथ रखी है, जहाँ पे वी शोकेस हिम in briefly about the kind of things that we have been doing, the kind of expertise that we have, and for greater involvement in national work. जी, एक पॉइंट और ऐड कर दूँ। जी करिए। जी, जापान को जो हमने इसमें शामिल किया है, जापान में आपको पता हो कि जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं दुनिया के। बहुत ही अच्छे डैम्स हैं वहाँ पर। जैसे यहाँ पे बड़ा डर रहता है कि भूकंप आया, टेरी टूट जाएगा, ये टूट जाएगा। जापान वर्ल्ड में एक ऐसा कंट्री है सबसे ज़्यादा भूकंप आता है और सबसे बड़े बड़े डैम है उसके पास। तो जापान से अभी जो हमारे प्रोग्राम है, जापान को हमने कोई पैसा नहीं दिया, जापान वाटर एजेंसी को, वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है इसको, जो उसने एक प्रोजेक्ट लिया, पायलट प्रोजेक्ट लिया HRE का, ये वर्ल्ड बैंक ही फंड फाइनेंस कर रहा है, हमने कोई पैसा नहीं दिया उसको। तो एक मॉडल प्रोजेक्ट या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर HRE का वो जो पोस्ट सीस्मिक मैनुअल बना रहे हैं बेसिकली कि आपको आने के बाद हमें क्या करना चाहिए, डैम का क्या क्या चेक करना चाहिए, कोई इमरजेंसी है तो किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो उन्होंने ऑलरेडी मॉकड्रिल किया था अभी, आई थिंक अक्टूबर में पूरा टीम आया हुआ था HRE के ऊपर और दे डिड द मॉकड्रिल। मैनुअल ऑलमोस्ट तैयार है, दे आर शेयरिंग विद ऑल द एजेंसीज इंडिया की। तो ये मैनुअल हमारा एक कहना चाहिए एक मॉडल मैनुअल होगा जिसको हम डुप्ली रेप्लिकेट करेंगे। कैरी डैम है, बाकी दूसरे DVC के डैम्स हैं, जो भी हिमालय रीजन में, पंजाब में है, BBMB के हैं, तो सर ये बहुत ही अच्छा काम है, फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहा है। इट वुड बी वेरी ग्रेट यूज, मतलब इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। डॉक्टर साहब, पीछे कुछ इस तरह की खबरें आती रही हैं कि भाखड़ा और नागर डैम जो है वो बूढ़ा हो रहा है, अपनी क्षमता खो रहा है, उसकी कैपेसिटी कम हो रही है, इसी बारे में कुछ कहेंगे? That's the whole idea. आप हर एक डैम की सिस्टमेटिक साइंटिफिक इंस्पेक्शन हो जी, उसमें जो जो कमियां दिखी उनको ठीक किया जाए। That's the whole idea. अच्छा सर, जैसे आपने It is like good maintenance अगर उनकी होती रहे, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस होती रहे, it'll go on. अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि जैसे डैम्स के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम है, मॉनिटरिंग, सर ये सारी चीज़ें हम एक पॉइंट आउट करेंगे, तो उसकी समय सीमा क्या है कि हम कब कह सकेंगे कि हम 1 साल बाद, 2 साल बाद हम इस स्थिति में होंगे कि भारत के सभी डैम के बारे में हमारे पास जानकारी होगी और रियल मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, तो उसकी पूरी टाइम लिमिट हमने क्या Early stages 225 प्रोजेक्ट इसमें है अभी जो ड्रिप प्रोजेक्ट चल रहा है। So we are hoping that by the year 2019 they will all be fully well equipped. The problems would be taken care of and they would be well equipped. And then the second drip project would cover the other major dams. ठीक है, हमें लगता है कि एक बार ये लॉ आ गया, डैम सेफ्टी लॉ, so this whole activity will become very fast. कब तक उम्मीद है सर? We are hoping कि हम बिल्कुल तैयार हैं उसके, आज इनके सबके स्टेट्स के व्यू लेके we'll go for it. अच्छा, अभी कितने स्टेट्स के यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो है जो इसमें सभी स्टेट से और यूटी स्टेट सभी स्टेट्स के, जैसे भाखड़ा गैस मैनेजमेंट बोर्ड से लोग आए हुए हैं, हीराकुद से लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से लोग तो आए हैं। डैम को जैसे आपने बताया कि भूकंप से जैसे इस हिमालयन रीजन में जो है ज़्यादा खतरा है, और कौन से ऐसे चीज़ होते हैं जिससे कि डैम को ज़्यादा खतरा है? एक तो भूकंप तो एक समझ में आती है कि भूकंप से जो है धरती हिलती है और उससे फ्लड डैमेज होता है। आपका जो गेट्स है, you don't maintain them. How will you run it? जब आपको जरूरत है उनको ऊपर नीचे करने, they don't work. पानी जितना डिजाइन है आपका उससे स्पिलवे कम है, जितना पानी आप छोड़ना चाहते हैं डैम से, हीराकुद में उससे स्पिलवे कम है। Obviously there is a problem. ये बात समझ रहे हैं मेरे? कि जितना पानी छोड़ना चाहिए डैम से, जितनी फ्लड डिजाइन रिव्यू पैनल ने सजेस्ट किया, उससे बहुत कम स्पिलवे की कैपेसिटी।
So there is a problem. अगर गेट आपका नहीं खुल रहा जैसे KR सागर में चल नहीं रहा smoothly, there is a problem. So all those issues are being addressed. नहीं, एक तो जहाँ leakages है, इवेंट्स हैं, एक है मैन-मेड इवेंट्स हैं. अगर आपने अपनी मशीन मेंटेन नहीं की है, गेट नहीं खुल पा रहे, तब दिक्कत आ सकती है. और एक नेचुरल इवेंट्स हैं, फ्लैश फ्लड आते हैं, क्लाउड बर्स्ट होता है, कोई आता है. क्लाउड बर्स्टिंग की जो इंसिडेंट्स हैं वो उत्तराखंड में बहुत बढ़ रही हैं. इनसे भी कुछ खतरा हो सकता है. सडनली बहुत सारा पानी आ जाएगा तो खतरा हो सकता है ना. उसको अगर आप निकाल नहीं पाएंगे, उस पानी को रिलीज नहीं कर पाएंगे, तो वो रिलीज आप तब कर पाएंगे जब आपके सारे सिस्टम ठीक काम कर रहे होंगे, मेंटेनेंस ठीक होगा टाइम पर. ठीक है? Thank you. A warm welcome from my side. My name is not Alex Cicero. This is my colleague, which is now retired. My name is Andrea Fasciatti. I'm heading the fiber optic sensing department at Group Telecom Cables in Switzerland. And I would like, in my short speech here, give you some information about how you could increase dam safety and dam integrity by using a technology called distributed fiber optic sensing. Whenever all of us are driving through a tunnel or over a bridge, or when we are in a public building, all of us would like to be sure that the health of this construction is in a good shape and that we do not risk any damages to our health and to our lives due to a collapse of the construction. Same to all the people who are living close the surroundings of dams, whether it's hydropower dams, mining dams, barrages, or dikes. On the other hand side, all of you as operator of such dams, as responsible for the security of those people living around, must be highly interested into a technology which gives you a good information base on the health of your dam, in order that you are able to take the right decisions, to start measurements at the right point in time, at the right place, before a collapse might happen. Now the question comes up, which technologies to support that? How can you get this information in time and make best use of it? And one of these technologies is this distributed fiber optic sensing. As you might know, Switzerland is a small country, but like India, also we in Switzerland have a lot of mountains, have a lot of power, and the biggest portion of our energy production, like in India, also comes from the hydropower. So we have a good experience within our own country, protecting our dams with good technology, but we are providing these solutions all over the world. What are the threats actually to a safe operation of a dam? The structural health of your construction clearly and strongly depends on the statistics, on the anchorage, on the material integrity. It depends from aging, cracking within your dams, leakage which opens up doors to humidity, which puts your construction work in danger. Not only the dam itself must be monitored, but also the environment around it. Soil deformation might interact directly to the dam itself, but also may cause landslides which go down to the lake and then increase the pressure to your dam. Seismic activities, whether it's earthquakes or slower seismic activities, for sure have an impact as well. Exceeding maximum water levels in the lakes behind due to heavy rainy seasons, for instance. But not only natural forces cause dangers, unfortunately also human behavior might cause a dam under risk, thinking about sabotage, obstruction, terroristic attacks, whatever. So we are looking for solutions which help you to protect you against all of those possible dangers. And what could we do? What are the measures that we could prevent? The easiest one, of course, always is fatalism. Thinking everything will go good, I don't have to do anything. It's the cheapest one.
but it's the one with the highest risk. So probably you not really sleep well, and it's not the appropriate solution. The next step, which is better, is a physical and visual inspection on a regular basis. This, however, is very manpower intensive, and it takes a lot of time, and it gives you only information about the surface of your structure, the surface of your dam. How can you get information from the inside? How can you discover cracks before they become visible? This is also possible, but not with this visual inspection. Going to use technology, conventionally in the past, there was the possibility to introduce active point sensors into the structure. The drawback of this solution is that active point sensors, on one hand side, you need to power them. You have to place a huge number because you have a big wall that you have to maintain. You need to connect them to data cables which deliver you the data. And you have, because they are active equipments, you have to do maintenance on them. They will break after a certain time, you have to replace them. This means you have to install them in an area where they are accessible. So there are quite a lot of points which are not really satisfying. Now, state of the art, since approximately 15 years, offers distributed fiber optic sensing technology. Fiber optic sensing is based actually on a sensor which is represented by a fiber optic cable which is fully passive, which can be installed within the inside of your construction and not only on the outside, which delivers you information about strain, about stress, vibrations, temperature changes within your building as well, and not only on the outside. And it is fully passive, which means it needs no maintenance. Once you installed this sensor, basically you can forget about it for 30 years and get advantage of the data delivered by it. Brook Cables is a company which since 120 years is manufacturing cables. We started with fiber optic sensing 20 years ago in the very beginning of this technology. The whole solution depends, or the whole solution consists basically of two parts. One is the active measurement equipment, which is electronics, special electronics. And then, of course, the important point is the sensor itself, because the better the sensor is, the more sensitive the sensors you deploy, the very better are the results that you get out of them. These 20 years of experience is a very valuable asset to our company, and therefore we deliver solutions to dams all over the world. If I'm talking about hydropower dams, it's not only the concrete dams. I'm also talking about natural dams. I'm talking about dikes. I'm not only talking about hydropower, this might also be mining dams, river dams. All of them can be supervised and monitored with the same technology. However, the measures that we take might differ. The cables, the sensors that we deploy might differ. And that's why it's very much of importance that before starting a project that we may get a good knowledge about where the sensor shall be deployed in order to select the right cables. It's not standard telecom fiber cable that you might deploy. It's important that really you deploy very highly sensitive fiber optic cables to achieve good data. How does the technology work? As mentioned before, you have electronic equipment, which you can see represented in this black box. And then attached to it, you have a long fiber. This might run up to 50 kilometers, which of course is not needed in dams. There you are very finely shorter distances. This electronic equipment injects light impulses to the fiber. And at each and every point of the fiber, a small portion of this light is reflected back to the measurement equipment. This reflected light has a characteristic which strongly differs depending on outside influences like temperatures, stress, vibrations, or noises and acoustics.
And this can be analyzed and then displayed on a graphical user interface, which eases the operation for your control center staff. What are the measures that today we can detect with this technology? It's temperature with resolution of 0.1 degree today, which is very exact actually. We can detect tension or strain up to 1 microstrain, which means micrometer per meter, which is also very accurate. We can monitor vibrations. We do monitor acoustics. Even pressure and chemical elements can be discovered and detected and monitored by the technology. What you can see here in the blue squares are applications which then are used typically in the dams, in the dam monitoring. We go a little bit more in detail during the next 3 slides. What can DTS, distributed temperature sensing, be used for? Leakage detection, for instance. Very important because you must know where you are losing water, where your dam gets humid. We use the fiber also to do a more accurate strain sensing, stress sensing on your construction by introducing temperature compensation fibers in order to know which part of my stress is caused really by a movement in my wall and which part is caused by the elongation of the cable itself due to changes in the temperature. We can monitor concrete curing during construction works of new dams. We do observe seasonal temperature load cycles to get an idea about their impact to the health of the wall. Even sediment level in retention basins can be monitored and supervised with the technology using temperature sensing. The next topic is DTS or DTSS, which means distributed temperature sensing, distributed temperature and stress strain sensing. Structural health can be monitored. Statistics of the wall itself, statics of the anchorage, material and wall integrity, but also the aging. We do this stress analysis not only over a short period of time. We can see how my structure, how the wall is behaving over the years, what are the changes, because we are able to take pictures and compare them with pictures within a year and see what has changed. Event monitoring. For instance, we suffer an earthquake. We have the pictures before the earthquake. What did the wall look like before the vibration? And how does it look like after vibration? Was the impact that big that I have to take measure? Or did we suffer hopefully no impact on it, or no severe impact? Also humidity and leakage can be detected by using this technology. Finally, last but not least, distributed vibration and distributed acoustic sensing. In order to discover leakage by listening to the noise of water flowing through. Cracks, hearing the cracks when they happen, also inside the wall, and not only when they become visible on the outside of the structure. Observing vibrations, for instance, of turbines. Are they equal or are they increasing and bringing me to a critical level? Seismic activities can be monitored, and intrusion control, meaning do we have hostile people around which try to enter into areas to do damage to my structure which should not enter there. All this can be detected by acoustic sensing. What is the point that we have to take care of? We are not talking about telecommunication cables here. Also, it's fiber optic. We are talking about sensors, and of course, the more sensitive your sensor is, the better and more accurate your results are.
So I always tell to people which come to me and say, yes, but fiber is fiber. I can use any kind of telecom fiber to do this. It's dangerous. It might be dangerous because the accuracy is not the same, and sometimes it will put you into a stage of, oh, everything is fine, I do not have any alarm on my system, but in the reality, not everything is fine. So in my point of view, before do that, better do nothing, because wrong security is worse than having an eye, a visual eye on your structure. Alex, can you conclude? I will conclude, yes. I will go through very quickly. You are not alone with the applications. We use this technology for pipeline monitoring. We use it in mining, transport, downhole in oil and gas, geotechnics, energy monitoring, fire detection in tunnels, security. So you can see there is a large and growing application field for this technology, and it is a deployed and proven technology. It's not something new. I would like to conclude now. What are the conclusions? There is a technology which allows to measure several types of events: temperature, strain, stress, humidity, vibrations, acoustics, to increase your picture of the safety of your dam, which allow you to take measures in time and not when it's too late. However, the choice and the selection of the right cable, which gives you the right information and the right accuracy needed, sometimes might be difficult, and we are very glad to support you. The better we know your environment, the better we can guide you and help you with the right cables to be deployed. It is a cost-effective solution. Imagine if you have a length of 2 kilometers on your wall, which you would like to monitor, and every meter you have to deploy a point sensor. This results up in 2,000 active equipment, which you always have to maintain. With this solution, you deploy one single cable and you get information at each and every point of your fiber. Distributed fiber optic sensing technology is successfully deployed in many other applications, as we have seen before. A very few extract of a reference list. I would like just to stress 3 of them because we have deployed this technology also here in India. You can find our cables in, for instance, the Gadam-Parey Dam. I hope I pronounce it somehow acceptable. You can find it in the Servolar Dam, which we have seen before. And we are now working on the project in the Upper Bachmani Dam as well. And we really hope that we might support you in many other projects as well. I do not have to add to the list that we have. This is 2 weeks ago in the US, 188,000 of people must have been evacuated to the high danger of a dam which was not in a good status anymore. This is much more cost intensive. For more information, I'm really glad to welcome you outside on our booth. You can find here my contact details. I will have them for sure also on my business cards. I'm there not alone with Brook Company. I'm there also with a sister company of ours called Rittmeyer, which a lot of you might already know. They are very specialized in level measurement, in flow measurement, and in angle measurement in hydropower applications. So please visit us outside. With this, I conclude, and I thank you very much for your time and your attention. Mahajan to provide us some information about radial gate disquiets due to zinc cooling. I'm sharing my experiences of inspections for the last 6 years with respect to radial gate, and that I put in my paper radial gate disquiets due to zinc chloride.
we use zinc pouring in between anchor girder and proline bracket. The joint we fill with zinc. This practice is going on since last 50 years in Maharashtra. We are having around 122 dams and having 999 radial gates. Maybe bigger, maybe more. And here this practice is used.